सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला है एंड यू हैव कनेक्टेड टू ऑल अस एट दिस virtual award show and virtual launch of our new two divisions, one the adhesive and the other is the legacy range. आज I feel really proud that all of you who have worked very hard and together as a family we have achieved something which is phenomenal. ये awards जो आज conceptualize करे गए हैं has not been focused only for sales. This is for all the family members of our company who have worked with during thins and thicks time with us और उन्होंने अपने utmost support कंपनी को दिया है, लॉयल्टी दी है और सुझाव दिए हैं. तो ये बहुत बहुत बहुमूल्य अवार्ड्स हैं जिस वजह से हमने उन लोगों को वी फेल्ट दैट एट द राइट टाइम वी मस्ट ऑनर ऑल ऑफ देम. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड वंस मैं उन सभी विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन्होंने इस साल ये अवार्ड्स जीते हैं एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू से all the best to the winners and the people who have not won the awards. It doesn't mean that they have not pushed in, they have not worked as strong as the others. I would also like to thank all the team members of Harrison who have put forward a lot of time and a lot of hard work to get this fantastic event online. ये कभी पहले नहीं हुआ है, to do something which has never been done before. And this was just a conceptualization by the team and to bring about such a beautiful event. I would like to thank all of them for putting hours of hard work and some sleepless nights to get this beautiful event. So सारे टीम को मेरी तरफ से congratulations and a big thank you to all of them. जब मैं सोचता हूँ कि I am supposed to give a tribute to my father, Shri Anil Moga, I feel tribute is a very small word which I in terms of my relationship with him, one on the business front and other on the personal front. I believe he was not only my father, he was my business coach, my mentor, my family, my personal coach. जिन्होंने मेरी जो लाइफ है 360 डिग्रीज कर दी. I think I owe it all to him, everything to him, what I am here as today and the company. I think बहुत ज़माने पहले एक एड कंपनी ने बनाई थी जिसका शायद आप सबकी मेमोरी में से शापन कर दूँगा या मेमोरी में दोबारा ले आऊँगा, जिसका कहना था ना कोई डर ना घोटाला जब लगा हुआ हरिसन ताला, हरिसन पीतल का भी ताला, हरिसन लोहे का भी ताला, आपकी हर ज़रूरत के लिए हरिसन ताला. तो जब ये लाइन हमने उस समय सोची, मेरा दिस वाज 1990s when this पंच लाइन बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग. तो उस समय फादर साहब से मैंने उनसे पूछा कि इस लाइन के लिए आप क्या कंसेप्चुअली व्हाई डिड यू थिंक ऑफ दिस लाइन. कहते उमंग इन द फ्यूचर Harrison will be known for products or locks for every need. आपकी हर ज़रूरत के लिए Harrison ताला. So like for any security purpose, Harrison lock will be there. Now when we look forward about 3 decades from that story today, so I won't be shying away by saying आज Harrison not only in locks but in other fields like kitchen, like hardware fittings, like in screws and fasteners, like in now coming up in adhesive division. तो अपना मार्क बना रही है और हम हर चीज़ के लिए अवेलेबल हैं. So I think he was the visionary who could think that Harrison could be available for all users, and he gave us a guiding path to move in that guiding path. We as his soldiers, as his men, worked on that path, and today the company has reached these milestones. तो उनके कुछ ऐसे खास बातें हैं
जिसको प्रॉब्ली बोलते बोलते मुझे दिन लग सकते हैं, बट इन संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज वर्क वाज फिनोमिनल। मतलब मैंने बड़े कम लोग देखे हैं जो इतने हाइट्स में पहुंच गए हैं, एंड they were still that dedicated towards their own work. So the dedication was pushed more strongly with the discipline we had. मतलब उनका समय पे दफ्तर आना, उनका शाम तक जब तक सब काम करें तब तक बैठे रहना, जिसको उस समय कहते थे कि बढ़ा के जाना, और हर चीज़ में डिसिप्लिन, whether it is work, whether it is family, whether it is his own lifestyle. He was very one of the most disciplined man I could ever come across. Then I think he was very persistent about things and consistent about things. मतलब उनकी जो खासियत थी कि वो एक काम करते तो लगातार उस काम पे पीछे लगे रहते थे. So for me, I think it is one of the most important lessons of my life, which I say on every day. So what you do is every day. If you have to do work every day, you have to do something which you should do and follow it up. Just don't do it once and then just forget it. So I think persistence and consistency is one thing which he worked, and I think the brand sees that, because there has been very few brands in India which have seen 7 decades. So ये जो लगातार करने का एक सिलसिला है, वो हमारे ब्रांड में हमारे लीडर्स जैसे हमारे आरपी साहब, हमारे दादाजी आरपी मोहम्मद साहब, और अनिल साहब एज बड़े सर इन द ऑफिस, उन्होंने डाली है. तो आई होप वी वुड एज they're not there, we as a men would follow the legacy as his partners in progress. We will follow this legacy with all of you, with all the family members. And lastly, I think his very important fundamental thing about his own business attribute was making things very simple. तो वो चीज़ों को बड़ा सिंपली पुट फॉरवर्ड कर देते थे. आज की डेट में जहाँ चीज़ें कॉम्प्लेक्स करने में लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, वो बिजनेस को हमेशा सोचते हैं उसको सिंपल कर दिया जाए. आई थिंक इट हैज़ टेकन मी इयर्स टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेनन कि चीज़ों को सिंपल करो तो काम ज़्यादा जल्दी होगा और ज़्यादा अच्छा होगा. तो समय के साथ चीज़ें समझ आती हैं. तो आई थिंक आई वुड लाइक टू से lot of things, but this may continue. But I think one thing I can say, thank you, Dad, thank you, sir, for just first guiding me through all the thicks and thins of my life, telling me how comebacks are very important. You fall down, but you have to get back very soon, and being strong. And one punchline he would always say, young man, get up. तो रुकना मना है. तो आई थिंक फॉर अस द पंच लाइन फॉर द नेक्स्ट ईयर शुड बी रुकना मना है. तो हम रुकेंगे नहीं, हम तेज़ी से चलेंगे, ठोस कदम लेंगे और रुकेंगे नहीं. सो रुकना मना है.